ఆ డోర్ వేసుకో. ఆల్రెడీ మ్యూట్ లో Hello. Hey, hi guys. Good evening. Good evening, sir. Hi, good evening. Good evening. Good evening, sir. What about the others? Two people are talking. Hi, sir. Good evening. Very good evening. Sumit, Manshu, Good evening, sir. Yeah, very so good evening. good evening, sir. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Babad. Yeah, okay. So let me introduce myself. So guys, thank you so much for joining, and I'm so sorry for the inconvenience. There's some personal issue I had, so I had to rush and join a bit late. Thank you for understanding that. So yeah, second of all, think- welcome to the first lecture of our training session, and I hope that it would be a very great lecture we would have. So there are some conditions and rules I have as a personal, I would say. So make sure that whenever we have any lecture, acha, before that, guys, are we all comfortable in complete English, or do you want me to continue with Hindi and English? From my side, it's fine with English. Fine with English. Okay, good.
I want review like everyone's to feedback on that. सर हिंदी में बोलिए सर हिंदी में Okay, Raju, yeah, okay. No, sir. I need Rajesh, English Mhm. only. Okay. Yeah, What for about me, Rahul? for me, it is Comfortable okay in with both English and language, sir. Hindi. Yeah, both Both languages work for me. both languages okay. Yeah. Yes. Okay. Girja, so don't like guys. Can anybody let me know who doesn't understand Hindi at all? Like in case if we go with both the languages like in parallel. Okay, fine. No, just asking, guys. Just asking as per your comfort level. If who is that one person like who doesn't even understand English at all? Sorry, Hindi maybe. No one, sir. Guys, please speak, please. Hello, sir. Yeah, Bhagat. Yes. Sir, sound is not clear. There is हाँ. issue. Sound is not clear. हाँ, आपका आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, बीच में कुछ ग्लिच जैसा फील हो. Is it? Is it okay now? Yes, now okay. Yes, sir. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. The video is on. Can you please tell me your name? It's a number 1606025239. But can you please tell me your name? You're on mute if you're speaking. राजू पुजारी No, Raju. Is this you? With the video? Raju. नो सर वो बंद करके रखा हूँ सर वीडियो No. There's one person who's in the video, like not even one, two. But one Bhagavad is already, the name is there, but another person, I'm not sure. The numeric number is there in the ID. Hello. Buddy, you are speaking, but you are on mute. Can you please unmute yourself and then speak, please? Okay. Maybe I might not be. Anyhow. So yeah, let's start with the introduction, first of all. So guys, that today there will be, okay, sorry, before that, I did not got the answer from everyone. Guys, again, just to ask, please speak up and let me know how we are compatible with language. Like Raju, I am aware that he wants the lecture to be in Hindi. But what about others? Rajesh has Yes, sir. mentioned that he is comfortable with both the language. Giriza is also might be comfortable. What about Sumit, Rahul, Himanshu? So can both Sir, I am also comfortable with both language. Sir, I also comfortable with both language. Okay, Rahul, Yes, sir. In both language, I am comfortable. Bhagwat. Yes, sir. I am also compatible with both languages. Okay, that's great. So yeah, let me introduce myself. So this is Nitesh this side, and I have an experience of and I have vast industry experience where I've done basically more than 12, 13 implementation projects. So that, of course, you know aware about the implementation project, but if just to brief about it. So implementation projects are the ones where basically, when you implement SAP in any of the company, okay, for any of the client, what happens is that like a client or company basically wants an SAP in their company, okay? So there is a team, okay, who goes to their place, or maybe depending on the like requirement, if maybe virtually or maybe they go to the place. Hello.
Yeah, okay. So maybe go to like other client site, okay, or virtually. What they do is they go to their place, they do the requirement gathering, they understand the business. It could be any industry, okay. If you talk about manufacturing specifically, as we are talking about manufacturing here, production planning here, so they go to their place, they understand the manufacturing, the production planning concept, business processes of that, and accordingly they understand it. They prepare documentation that how and what they want. They get the sign up about that things, and then they design the same things in system. They get the approvals, they do the testing and all this the stuff they do. So this complete process. So where the implementation is basically complete project, okay, wherein you have all many phases and activities along that in that process actually. So that is the meaning of implementation, you know. So in that case, that's yeah, that's just a brief of high level, very high level brief I told you. Okay. So this type of project I've done more than 11 to 12, which is a lot if you know as you have done in your career. And other than that, there is one more category project which is support project. So support project basically means that you just support someone after the implementation. So suppose a company has SAP already in their company, okay, and they facing from their user is facing some issues, some challenges, and they want some support with someone like कुछ ना कुछ support चाहिए. They are facing some issue. Maybe user कुछ ऐसा है कि जो नया join किया है, he's not aware about this stuff, and he's making some mistake. Okay, in that case, maybe he needs some support, and there is no one in your company right now who like to support that that level of issues and all. So what companies does, what client does, they hire someone from external as a partner to support them. Okay, external companies to support them with SAP issues. So those are the kind of projects are called SAP support. So yeah, that's all. Yeah. So anything specific, anything you would like to know about me, go ahead. If not, I would like to ask you guys to introduce yourself. So maybe start maybe from Himanshu. Good evening, sir. Myself Himanshu Bogekar. I am from Varora, Chandrapur, Maharashtra. I have completed my Master of Pharmacy with pharma chemistry, and now I am joining for SAP training in PP module. Okay. Yeah. So Himanshu, where do you work right now? Right now, I am working in Indo International Private Limited, Indore. Indore. Yes, sir. Okay. So it's been how many months or years you have been there, or does the company has SAP? Yes, sir. Company has SAP, and also I am right now I am operating that also, but it is a read-only access only. Okay. So what is your role in that company basically? What do you do? Or maybe in SAP, In what that do you do? company, actually, in that company, I am in the quality control department. It is not a complete SAP, but there is a requirement of SAP in material management. That's why I have some access. Okay, I see. Okay. Thank you, Himanshu, for the introduction. Yeah, Rahul. Good evening, sir. My name is Rahul Sontake, and I'm from Pune, and currently I'm working in web writing in PC Sorry, Rahul? department from last 1 year. Hello? Yeah, Rahul, can you please come again? Yeah, pardon. Yes, sir. My name is Rahul Sontake. Okay. Currently, I'm working in web writing. Rahul, your voice is breaking in between. Excuse me, this is someone from that number 160539 continuously interrupted. I know, Sumit. I'm seeing that. Guys, I already told them, but I think they are not able to hear us out, maybe, or maybe it's something else issue. Guys, you have a video open. First of all, I think there's a numeric ID you have got. अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, then please speak in Hindi. हेलो जी हाँ सर. आप आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर आ रही है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आपका नाम चेंज कीजिए उसमें न्यूमेरिक आईडी से, ओके, सो दैट वी क्या कैन चेंज गेट करना है? आपका नाम आईडी जो आपने यूज किया जूम आईडी, उसमें न्यूमेरिक नंबर है 160 समथिंग,
So that is not the case here. Please change your name. So at least बाकी सबको भी आपको नाम पता चले. At हाँ least सर क्या मुझे बोल रहे हैं आपका नाम. What is your name? हाँ सर Buddy, what's your name? हाँ सर राहुल Yeah. So Rahul, can you please introduce yourself? हाँ सर Can you please introduce yourself? हाँ सर मेरा नाम राहुल है Okay. सर, And मैं where do you बेटर है work? बेटर है नीतीश सर- सर, आप थोड़ा हिंदी में करेंगे तो वो भी राहुल भी समझ जाएगा। जी सर हाँ सर सही बोल रहे हैं सर जो भी बोलते समझ आ रहा है मे बी सर अभी भी क्या Guys, सर एक इसीलिए मिनट सर इसीलिए अभी मैं आप क्या आपसे बोले पूछ कि रहा हूँ. देखो guys, I am comfortable in either of the language. Okay. I can go जी। completely in English और पूरे हिंदी में जा सकता हूँ. I am comfortable with और anything. सर आपका सर हिंदी आपका बता दीजिए प्लीज सर वीडियो भी ऑन रखिए सर। Guys, एक रिक्वेस्ट है, cannot- आपका वीडियो ऑन रखिए सर। okay, we'll try from the next lecture. Right now, actually, I'm not and this is a place. Okay, ओके we'll do one thing. So we'll do it like that only. So from next lecture on, maybe we'll try with the video, or maybe सर not एक only सर this in my सर एक case. मिनट हाँ जी. सर अभी क्या बोले कि आईडी पासवर्ड चेंज करना है Sorry, राहुल क्या बोल रहे हैं आप? सर आपने अभी बोला ना कि पासवर्ड क्या चेंज करना है तो मैंने अभी नहीं किया क्या चेंज करना पासवर्ड है नहीं, पासवर्ड नहीं. मैं कह रहा हूँ आपकी जो आईडी है ना, जी सर वो चेंज कीजिए आप. आपका जो नाम, आप जूम आईडी जूम जब ज्वाइन करते हैं, राइट, जी जी तो अपना नाम आता है, राइट, जूम आईडी पे. जी जी हाँ आता है हाँ जी. तो जूम आईडी पे जो नाम है ना, वो आपका न्यूमेरिक कुछ नंबर लिखे हुए हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज उसका नाम चेंज कीजिए एक्चुअली. तो नाम शो नहीं कर रहा एक मिनट कोई बात नहीं, आप अभी रहने आप दीजिए. नाउ आई नो योर नेम राइट नाउ. आप नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर ज्वाइन करो, उससे पहले एक बार आप अपने जूम आईडी का जो नाम या अकाउंट जो है, उस पर अपना नाम जरूर चेंज कर लेना प्लीज. ठीक है राहुल, आप म्यूट पे हो शायद. ठीक है. सो या where were we? हाँ राहुल, प्लीज राहुल. हेलो हाँ जी राहुल, प्लीज. हाँ सर माय नेम इज राहुल सोनटक्के currently I am working in Varroc Lighting Takwe in PPC department from last 1 year. ओके. कहाँ पे कंपनी, कहाँ पे ये? Varroc Lighting चाकण सर पुणे. अच्छा, पुणे. ओके. Last year I am working in production planning and control department. In my company I am currently using SAP. ओके. Yes, sir. So what is your role right now? What exactly do you do? I am working in production planning sir. Production planning and control department. Just मतलब आप exactly SAP पे क्या करते हैं? एसपी पे सर अभी डिस्पैचेस निकालना, एमआरपी रन करना और शेड्यूल अपडेट करना, ये सब I see. ठीक है. Good. So गिरिजा. Hi, sir. Sir, myself, I'm Girija. I'm from Bangalore. So I am not working anywhere still now. So I Okay. had experience in SAP PP. So I learned from my sister only. So I'm little bit aware of SAP PP only. So that Okay. I need real-time projects also. So that only I joined in that STK IT education, sir. Okay. That's very good. Huh. No worries. So you working earlier, गिरिजा, or is No, it no, what? not related to SAP, sir. Okay, so you want to join SAP now actually. Yes, sir. Okay, that's very good. Thank Yes, you sir. for that. That's Okay. very good straight. Yes, sir. Okay. So did you learn SAP somewhere really, or just the first time? Yes, I know the process and all, but I learned from experienced candidate only, so that I know I joined here also, sir. Okay. Perfect. Huh, No worries, Gira. So ensure that I hope that you have a laptop and we'll do the practice. Yes, on our sir. side. Yes, sir. Sure. That's very good. Yes, Thank you so much for the introduction. yes, sir. Okay, Yeah, sir. so Sumit. Yeah, thank you, sir. Good evening. I'm Sumit Thomas, and I'm from Noida. And I'm an electronics graduate, and I'm having total work experience of more than 12 years. And currently, I'm working as a
PPC manager in Dixon Technologies in Noida itself. Which one? And Dixon Technologies. The Dixon Technology. Okay. Yeah. And if we talk about my SAP knowledge, so yeah, being a PPC member, I'm like using SAP, and my main motive, or you can say target of joining this course, is to learn SAP and to my modify, or my I have to change my career as an SAP consultant. Okay, that's great. That's great. So it's been how many, I would say, years you're using SAP? You can say since 2018 I'm using SAP. Okay. Like That's from great. last 5 to 6 years, but yeah, again, I would say the very basic part I'm using. No, that's okay. That's completely all right. So you're aware exactly which version of SAP you're using? Is it S/4HANA or ECC or what? Yeah, as for HANA. Great. That's great. Okay. Thank you so much. Thank you for the introduction. Yeah. So Rajesh. Yeah, good evening, Nitesh. Myself Rajesh Pillai. Hey, hi. And Good evening. yeah, I am heading PPC function in our company, and I have been working with SAP for the last I hope around 12 years as a user. I'm an user. What my purpose of joining this course is to have a more in-depth knowledge in SAP. Right now we are using ECC. Maybe, as you know, everybody has migrated to HANA maybe in a couple of years' time. So I am looking for more upgraded version knowledge in SAP and the PP module. So I have been using PP, MM, and SD modules as an end user, but I want to get more in-depth knowledge. That's why I have joined this course. That's great. That's very good. No, thank you so much. Yeah. Okay. Yeah, Bhagwat. Hi, sir. Good evening. Very good evening, buddy. I am Bhagwat Gogre. Basically, I am a dairy technologist and I belong to dairy industry. So I work with Mother Dairy, Amul, Parag, and Govardhan. And I work now. I am working with DS Group. Do you know that Rajnigandha? Haji. I am heading one unit at Udaipur, Rajasthan, as a factory manager. Okay. And for SAP, I am not aware of that much. Simple, small things I know that little things like SR, then PR, then approvals only. So I want to learn SAP thoroughly. That's why I joined this. Okay. Yeah, that's very good. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. So, Mr. Raju. यस सर, मेरा नाम राजू बिस्रल बुजारे है। मैं भी औरंगाबाद ऑटो इंजीनियरिंग औरंगाबाद में वर्किंग पे हूँ सर, एज अ पीपीसी इंजीनियर। ठीक है। अभी मैंने इसी साल ज्वाइन किया है। एक्चुअली मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है पीपी में। मुझे बॉम्ब बनाने आता है, राउटिंग आता है, पीआर निकालना, एसटीओ डालना, शेड्यूलिंग करना, सेल्स निकालना, जीआरएन करना, स्टॉक चेक करना, ये सब एक्टिविटी में करता हूँ सर। खुद को अपग्रेड करने के लिए मैंने ये जो हाना है वो करने की सोचा सर। ओके। अब आप में से किसको ये ओके, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एवरीवन गाइस। अब आप में से किन को आर अवेयर ऑन दैट पार्ट की व्हाट एसएपी कंसल्टेंट इज, और किसी का ऐसा है दैट एग्जैक्टली दे वांट टू चेंज देयर स्विच देयर जॉब फ्रॉम दिस एसएपी राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग टू एसएपी कंसल्टेंट, और मे बी आपको बस लर्निंग के लिए और इसके लिए आप सीख रहे हो, और देन फर्दर विल बी लाइक कि ठीक है आप इसी में ही आपकी जॉब प्रोफेशन में आप और इम्प्रूव करना चाह रहे हो। दैट्स इट। Actually, sir, no, sir, I want to change my career into SAP. Actually, I want to change my career as a consultant. That's why I'm here. Yes, sir. I also want to change my career from. Actually, sir, I want to add this to my profile. Okay.
Okay, Actually, I am great, working as a unit head, so I want to add this SAP also to my. great. Got the point. ठीक है. Maybe Rahul, Manchu. हाँ सर. Rahul, I think आपका यार there are 2 rounds actually. Rahul, can you please tell me your full name? सर राहुल दया. Sorry, राहुल दया सर. Rahul what? जी RAI. RAI, Rahul Rai. जी जी. अच्छा, okay. Rahul, इंट्रोड्यूस करोगे अपने जी. आप को प्लीज? हाँ सर. करते हैं आप, कहाँ जॉब करते हैं? सर A मैं little bit about. अहमदाबाद में. हाँ जी, सर हाँ जी, अहमदाबाद प्लीज. में सर मैं अहमदाबाद में टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ. चिल्पाल ग्रुप है ओके, टेक्सटाइल में सर. ठीक है. सर टेक्सटाइल में क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. ओके, ठीक है. सर तो मुझे सर मुझे सैप का प्रोडक्शन प्लानिंग सीखना है. नहीं, ठीक है. दैट्स व्हाई सब इसीलिए यहाँ पे है. बट बाय द वे, आप अभी एसएपी पे आपने काम वाम किया है? यू हैव हाँ एक्सपीरियंस सर ऑफ थोड़ा एसएपी? बहुत नॉलेज है सर. अच्छा, तो आपकी कंपनी में एसएपी है? हाँ सर SAP है यहाँ पे. ओह, दैट्स ग्रेट. ठीक है. ओके, सर थोड़ा ठीक बहुत है. जैसे स्टॉक निकालना या फिर MB51 में 52 दो चार टिकट चलाता हूँ सर. अच्छा, ठीक है. दैट्स ग्रेट. ठीक है. सर मुझे तो प्रोडक्शन प्लानिंग सर सीखना था, इसीलिए मैं आपको कॉलेज ज्वाइन किया. प्रोडक्शन प्लानिंग सीखना है? जी ओके, PP प्रोडक्शन प्लानिंग. जी सर, विल लर्न प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ, जी. है ना? ठीक है. So that's nice. Thank you so much for the introduction again. So yeah, so we were talking about who wants to change the career, like from the normal end user, whatever you are doing right now, to SAP consultant. So I जी. think most of the people you all want to change. So are you aware the process, like how and what to do and what all things? किसको idea है like how and what you will need to do as part of this career planning? जैसे भागवत आई थिंक हैज एन वेरी क्लियर एजेंडा कि उनको ऐड करना है अपनी प्रोफाइल में. दैट्स ऑल. मे बी क्योंकि जब वो अगर कंपनी चेंज या कुछ करेंगे तो दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट. Actually, बट I दिस इज can व्हाट lead गोस any ऑन. project in company regarding SAP. या एग्जैक्टली. सो आपकी कंपनी में या फिर जहाँ भी आप इस कंपनी में जाओगे, देयर ऑफ कोर्स यू कैन लीड अ प्रोजेक्ट इफ यू हैव एसएपी टू योर एक्सपीरियंस, Yes. योर प्रोफाइल एक्चुअली. बट आई एम Actually, सेइंग what अगर ये दो चीज है भागवत, all department reporting to me, like quality, production, store, dispatch, या एग्जैक्टली sales. एज अ कस्टमाइजर ऑफ कोर्स इट So I need to learn विल. the SAP. देखो, दो चीज है. एक है कि आप अपनी प्रोफाइल पे लाइक आप एसएपी सीख रहे हो, ओके, एंड देन आप अपने ऐड कर लिया कि आई नो एसएपी एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ एसएपी. एंड इन दिस केस क्या होगा, अभी आप सपोज आपकी कंपनी की बात करते हैं, आप अपनी कंपनी में ही अगर एसएपी सपोज इंस्टॉल होता है या फिर अपग्रेड होता है मे बी टू लेटेस्ट वर्जन, ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट आप उस प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हो फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम क्लाइंट Yes. पर्सपेक्टिव. जिस कंपनी में आपको उस कंपनी की तरफ से आप लीड कर सकते हो. बट Exactly. एक तो हो गया ये चीज. सो यू आर क्लियर इन दैट कि आपको बस वही चाहिए. बट व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क इज, देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एसएपी कंसल्टेंट. तो व्हाट दैट एसएपी कंसल्टेंट डज इज, एक तो हो गया कि चलो आपको नॉलेज है एंड यू आर डूइंग इट फ्रॉम क्लाइंट एंड. एक है कि जो जिस कंपनी सपोज करो आपकी कंपनी में जिसने एसएपी इंप्लीमेंट किया होगा ना, ओके, तो उसकी एक टीम आई होगी. इफ यू मस्ट बी अगर आप काफी टाइम तक Yes, कंपनी yes, में हो, yes, yes. एक टीम आएगी, उस टीम Team में आ आई गया कि हाँ राइट, पूरा वो प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करा काम होगा. किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट राइट, किया, एजिस बनवाया पहले. राइट, एग्जैक्टली. तो एग्जिस्ट टू बी जो भी तो बनाया एंड देन दे वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, टेस्ट किया, हाँ. टेस्टिंग करवाई आपसे भी, उन्होंने भी करी, एंड एवरीथिंग दे हैव डन एंड देन एसएपी आपको मिला, राइट, काम करने. Yes. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो बंदे आए ना, दोज आर बेसिकली नोन एज एसएपी कंसल्टेंट. सो हर एक कंसल्टेंट का अपना अपना एक अलग एक्सपर्टीज होती है. जैसे आप या हम अगर अभी करेंगे तो दैट वी विल बी इन एक्सपर्टीज इन एसएपी पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट. Okay. सिमिलर वे वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स एज वेल, जैसे कि फाइनेंस हो गया, कॉस्टिंग हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, राइट. Right. एग्जैक्टली. तो
everyone has a different capability, but उन लोगों को क्या है ना, that they are very much expert. मतलब वो आपको भी अगर कुछ डाउट होता है, so you reach out to them, right? And वो आपको फिर हेल्प असिस्ट करते हैं कि भाई ये चीज अगर इशू है तो वो आपको डिजाइन में या टेस्टिंग में या कहीं भी कुछ फंस गया तो आप उनको रीच आउट करते हो, ये होता है. So that's what I just wanted to know कि out of all of us in the meeting, how many actually want to change the career, not just कि learning के लिए कि हाँ भाई मैंने पीपी सीख लिया and मेरे एडिशन हो गया. तो आपके लिए भागवत जी, it's very good that you are doing that and it will be good for you as far as what I understand. But maybe is anyone, like just Giriza has mentioned that she wants to start the career into SAP, so she's very much clear on that part again. So maybe anyone else जो आपकी जैसे आप अभी after this learning, let's take a scenario. After this course, will you be continuing your job in the same companies or will you change as an SAP consultant? So let's talk about that. Nitesh, I would add something on this. Okay, I will in my second innings of my career, maybe post-retirement or so, having a vast experience in PPC, SCM, and manufacturing areas. The functional expertise is there. Clubbing with the SAP in-depth knowledge, I would like to change my career to a consultancy service or the project implementation phase. So that that is why that's my core intention of this. वीडियो चालू नहीं किया उसने. Issue. Yeah. No, Am I Rajesh, audible? yeah, you're audible. So Rajesh, Yeah, I would say the way like Bhagwat has mentioned, in your case, I would still suggest, as far as what experience I like have. So at this range of experience which you are right now, at the level which you are right now, I would suggest you that you should not change the career into a SAP consultant. But yeah, of course, the way Bhagwat is doing that, you are already at very good level in your company and all, and you've done a lot of things in your company, so your exposure and all, a lot of experience you carry. So the best part would be to add this skill as in your profile, and because you know what will happen. The why I'm telling you this, the reason behind that, if you will change the career, after this much experience into SAP and all, there'll be a little less chances that the companies would understand that. Because what companies do that, like they will consider you as, if you have maybe suppose 15 plus years of experience. Let's take an example, okay? And if you learn SAP now and you will tell them, okay, as in I'm talking about purely consultant company, okay? Not to end user kind of thing. So if you'll go to them, if you'll tell them that, okay, I have 15 years of experience and I was leading my own department in the company, and now I have the SAP experience as well. I want to change my career to SAP consultant. Okay, so what will happen is there will be two things. First of all, monetary benefit wise, you'll have to maybe whatever they have, either they'll have to stick on that first of all, and secondly, maybe reduced, or the chances are that you'll have to go below that, which is of course nobody wants that. First of all, second is in the market, SAP consultant or whenever anyone start as an SAP initially, so they consider themselves as a fresher. That as an SAP, not I'm talking about as an overall experience. In the SAP, they are first because they've just learned the SAP and they are just they earlier were doing as an end user part, and now they are actually learn the SAP throughout, and now they want to become as a SAP consultant. So what happens is that companies consider them as a very little experience. Like suppose you have 10 plus, no, they'll be like, okay, they'll consider as in 4-5 year, they'll consider as in 4-5 year experience that in domain one, and then they'll start you. So they'll give you maybe at most they'll give you consultant or senior consultant. That's it. And again, that will be not as a very good level. But as in what you can do right now is that the way Bhagwat mentioned, like Joe Bhagwat kareke, say in his company, if he learned SAP and he added on his profile that he knows SAP overall. Okay, so that will be addition that, okay, whenever a project comes in, or maybe in your company somebody says, okay, anything comes with SAP PP or maybe throughout SAP, so you will be that top guy to reach out to, that he knows that he has an expertise and he can help us out. So that will add more value to your profile there than as a SAP consultant. This is my what I see and what I've seen so far in this industry. Okay, right. But yeah, as in if I talk about other, if anyone like maybe Girija
maybe Rahul or anyone who has like little experience, like 4 5 years or 6 years experience, of course, I would say please that should go to SAP, because SAP is really, guys, let me tell you in just brief, SAP is a very, very good industry wherein बहुत कुछ है यार, like it's very vast, guys, very vast. मतलब nobody can learn SAP throughout. Nobody, not even a single human, as a human being cannot do that. बहुत बड़ा SAP. Even SAP में अगर आपको मैं छोड़ो, मैं अपनी PP की ही बात करूं, तो भी there are lot of things are there, ठीक है, because you know what happens is, जैसे मैं बताता हूँ अपना experience from last 11 12 सर project. मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी. एक्चुअली क्या सर, मैंने मेरी करियर की स्टार्टिंग की थी साउथ इंडिया से, तो वहाँ पे एक सेपरेट टीम थी एसएपी के लिए। मैं प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट वगैरह में पहले शुरुआत में काम करता था। हाँ जी, हाँ देन जी. मैं नॉर्थ इंडिया में मूव हुआ मदर डेयरी में, तो वहाँ पे भी एसएपी का सेपरेट डिपार्टमेंट ही था। तो बिल्कुल होता है. हमें क्या प्रोडक्शन से खाली डेटा देना था, लेकिन एसएपी के ट्रांजैक्शंस हमें करने नहीं थे। सो अभी मुझे इंडस्ट्री में नियर अबाउट 12 ईयर्स हो गए। अब जाके जैसे मैं अमूल के साथ जुड़ा लास्ट ईयर, तो अमूल Right. में जाके मुझे एसएपी के बारे में पता चला कि एसएपी में क्या करना होता है। अमूल में Exactly. क्या है कि आपको खुद ही करना, उनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है। So your production guy doing his work in SAP itself, तो आपको दूसरा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है वहाँ पे। Agree देन with you. अमूल लेफ्ट करने के बाद मुझे अभी यहाँ पे पता चला है कि अब तो मेरा प्रोफाइल ही नहीं है एसएपी के लिए, लेकिन जो जो भी मेरे अंडर के लोग हैं, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स है, सारे को भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं आता है। तो दैट इज द इशू मेरे साथ हो रहा है। तो इसलिए मैंने एसएपी पे फोकस किया है कि मुझे अगले नेक्स्ट ईयर तक मुझे एसएपी में सीखना है No, बिल्कुल बेसिक्स। गौरव, that's very very much clear, that's very good है, that's what I'm saying. आपने बहुत अच्छा सोचा है and you're doing it in very good way. Love the way you are working and you know the challenge actually कि आपको क्या issue है, कैसा है, and you definitely I'll make sure that we learn that much कि आपको कुछ भी issue या नहीं है, या फिर जो भी आपके like you know अंदर है, आपके नीचे टीम है, you will definitely help them out with any issue they might face. That's a very good thing. Now I am calling to head office. Any issue, then I am calling to head office, that SAP department, and they are supporting to my team. So I want to support my team myself. Exactly. No, I totally understand. That's very good thing. But generally, what happens, you know, in big company or anything जहाँ पे भी होता है, so there are SAP department होता है, जैसे you already know that part. Yes. जो भी अच्छी कंपनी होगी वहाँ पे of course अपना एक SAP का अलग ही टीम होती है, IT टीम या जो भी एक अलग टीम होती है जो आपको असिस्ट करती है SAP के साथ. So that's also a very good thing actually. आप उसको भी join कर सकते हो. That's a very 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 good thing actually. That क्योंकि आपको अभी ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, आपकी कंपनी में ही आप उस डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हो, because now you know you have that added skill in your profile. Yes. नहीं, ठीक है, that's a very good thing. So basically guys, maybe देखो हमने थोड़ा ऑफ टॉपिक लिया आज, हमने कुछ सीखा नहीं, और of course it will take some time. I just wanted to understand everyone's point of view, because I have some, you know, a different way of, you know, teaching and understanding actually. क्योंकि देखो everyone has their own goal end of the day कि कहाँ क्या करना है, सबको क्या क्या कैसे कैसे लर्न करना है, how they want to go ahead in the career and all, and everyone has a different path, of course. So question is, what is the motto? What is your understanding level? That I wanted to understand, so that accordingly we can start our lectures, according to we can learn, and accordingly we can go ahead. Because as I said, SAP, देखो guys, बहुत vast है. Nobody can cover everything, and nobody can understand and learn everything in within 1-2 months. It's all about कितना आपको प्रैक्टिस करनी है, कितना एक्सपीरियंस आपको है, और कितना आप लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो चीजों. It's all about that. So I would still request, देखो, I hope लैंग्वेज में तो अभी तक किसी को इशू नहीं है. Let's again reconfirm that. जी जी लैंग्वेज को इशू नहीं है, राइट? सबको समझ में आ रहा है एटलीस्ट. I'm trying हाँ सर, हाँ to सर, in English both, right? Okay. जी सर, Raju, what about you? हाँ सर, Raju, I'm talking to you. अच्छा सर, राजू बताओ, हाँ सर, हाँ सर, हाँ समझ सर, में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल सर. थैंक यू राजू. गिरिजा, व्हाट अबाउट यू? Fine. Yes, sir. Okay. So guys, again, just to repeat, anyone has any understanding issue, please feel free to, you know, raise your hand or something that I'm not able to understand. I'll repeat it right away. बाद में, if you have any issues, don't, like, you know, what happens is that flow breaks in between.
So जैसे ही मैं कुछ बोल के अगर रुकता हूँ, then you can ask कि sir I have not understood so far. Will you please repeat or something? Okay. Sure, sir. Sure. Okay. First of all, the second, yeah. So this was our introduction session, and I hope that we did wonderfully well. So again, a request for Messi, the way we did it today, like interactive session. So guys, make sure and ensure that जब भी हमारा कोई भी lecture हो, ठीक है, we make it interactive. Okay, जहाँ पे भी कुछ भी चीज हो, जैसे मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो I hope that आपको समझ में आया कि नहीं आया, at least you can give your comment. कि हाँ ठीक है, this is we have understood, not understood, yes, no, or any comment, anything. Okay, that would be very much better for me as well. I hope that's like okay with everyone. Yeah. Okay. Yes, sir. And Haji, thank you. Okay, so this is, and again, I hope let's talk about this. So guys, generally we do not have any video lectures. Okay, we do not have video open and all and video with everyone. But again, if you guys all of are comfortable, कि सबको video on, I think somebody made this request initially. कि सबके सब video on करें and then we study. I am okay, comfortable with that. I don't mind doing that. But I would suggest let's not do that. But it's on you, because what are the lectures I had? So we do not prefer that. That's not our, one of the this function we operate accordingly. But yeah, if you guys want to सबके सब video on करके and then we study, so I'm okay with that actually. But what's your comment on that, guys? Share your screen, sir. That's enough, I think so. So that's of course we'll do. That's of course we'll do. That is enough, When sir. yeah. So when we will actually do this starting the lecture and all, right? The practice lectures and all, and we'll go to SAP learning. Then of course we'll do the sharing and all. So that's of course will be in part. Yes. Right? Yes. ठीक है. That is fine. Yeah. Perfect. Thank you, Grija. So as of now, अभी तक किसी को कुछ issue, कुछ doubt? As of now, anything, any understanding issue, any gap? If not, then that's all. That's all was planned for today. We can start our next lecture tomorrow, and then we'll try to understand a bit about SAP, like from scratch. Okay, and then slowly we'll go ahead with the lectures and all, so that we समझ में भी आए सब कुछ हमको, and that we do not rush. कुछ ज़्यादा fast हम नहीं जाए, है ना? Okay. And ensure, guys, Yes, sir. again I'm saying, जब भी आप lecture join करो, you must join your lecture with laptop. Okay, So sir. that हाँ, मैं एक सबके लिए this is very important, guys. So that आप जो भी कुछ करो, आप actually इसको properly एक तो देख पाओ. फोन में you will not be able to do that. First of all, second of all, प्रैक्टिस भी आप कर पाओगे साथ साथ में कि कहाँ क्या चीज बता रहा हूँ मैं, आप वो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, देख सकते हो साथ साथ में, है ना? एंड ऑफ कोर्स प्लीज एक नोटपैड एंड एक पेन अपने पास जरूर रखना, और मे बी नॉट दैट वे, देन यू कैन हैव वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन विद इन योर लैपटॉप, उसमें आप कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हो. एक जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी कुछ बता रहा हूँ, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन कोड्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो आपको एज एन मैं ड्यूरिंग लेक्चर बता रहा हूँ, सो उस पर्टिकुलर मास्टर, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप वो चीज टॉपिक बना के लिख सकते हो, ये इस चीज के बारे में की पॉइंट्स, सो बाद में आप जब प्रैक्टिस करो तो ऑफकोर्स आपके पास वीडियो लेक्चर, सॉरी रिकॉर्डिंग लेक्चर तो रहेंगे ही रहेंगे. सो एवरी लेक्चर वुड बी रिकॉर्डिंग लेक्चर. ठीक है? सो नेक्स्ट डे, जैसे आज हमारा जो लेक्चर हुआ है, नेक्स्ट डे द इंस्टीट्यूट विल post the lecture in Drive, Google Drive link and all, and they'll share the Google Drive link path to you. So उसमें आप जाके वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो आपके जो भी लेक्चर्स है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल. ओके, सो या ठीक है, दैट्स ऑल. Sir. हाँ जी. So actually, as I said, I'm having total projects of more than 12 years. And since we will be completing this our courses, it will become around 13 years. And now at this point of time, I am planning to switch my career as a consultant. So, what do you suggest? That am I late or No, yet I can? एक आपको ना बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, आपने सुना होगा, मैं फिर बताया तो देखो, ओबामा started very early in his career as an president of America, and similar way Trump started very late, but still दोनों एक ही लेवल पे, राइट?
ओबामा भी Right. उसी पोजीशन पे बैठा था जहाँ पे आज ट्रम्प बैठे हैं, जब ट्रम्प थे अभी ऑन दिस पोजीशन, राइट? It's all about how you want to cope up, when do you want to start, and how do you want to start. That's all. कितना डेडिकेशन आप दिखा रहे हो, कितना आपको ईगरनेस से जाने की, एंड ऑल दैट्स ऑल मैटर्स गाइस। कोई बड़ी बात नहीं है चेंज करना करियर, बट मेरा वही था, देखो अगर आप आई हैव सीन वन पर्सन एक्चुअली इन माय करियर। एक्चुअली एक पर्सन थे जो इसमें थे अपने गवर्नमेंट कंपनी यार, आई थिंक भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल किसी में तो थे, वो इंडियन ऑयल में थे आई थिंक, या सो ही वाज इन इंडियन ऑयल, ही वाज वर्किंग एज एन वर्किंग प्रोफेशनल, ओके, एज एन एम्प्लॉय इन इंडियन ऑयल, गवर्नमेंट कंपनी जो है अपनी। he was working there till 12-13 साल का एक्सपीरियंस था उनको वहां पे। then he learned SAP, he did a wonderful practice, मतलब वो अपनी कंपनी में जैसे आप अभी SAP पे काम कर रहे हो ना, सिमिलर वो भी इंडियन SAP जो था वहां पे वो जॉब करते थे, अपने काम करते थे जो भी डेली रूटीन एक्टिविटीज है, बट वो थे तो एंड यूजर ही, बट somehow he had good hands on practice on SAP, and then उन्होंने भी सीख के during practice वगैरह काफी अच्छे से करी, and then he gave interview in companies and then he became SAP consultant. So now, धीरे धीरे he understood and he did very wonderfully well. So within a year, ठीक है, ओवरऑल जैसे SAP सीख 2-3 महीने का जैसे कोर्स अपना SAP का 2 महीने का ये वो करके, एंड देन उसकी कंटेंट खत्म होने के बाद में उन्होंने थोड़ा 1-8 महीना और एक्स्ट्रा लिया, प्रैक्टिस की, फुल फ्लैश प्रैक्टिस की अच्छी खासी, ठीक है, सब कुछ डाउट हुआ तो पूछा, करा, समझा, गूगल से जो भी कुछ किया ओवरऑल ही डिड इसका काफी अच्छा मेहनत की, एंड देन ही जॉइंड गिव इंटरव्यू इन कंपनी एंड जॉइंड। सो व्हाट हैपेंड वाज उन्होंने काफी अच्छा किया, ही रियली डिड वंडरफुली वेल, और वो एज ए लीड नॉट जस्ट एज ए कंसल्टेंट, आई एम सेइंग एज ए लीड कंसल्टेंट उन्होंने मेरे साथ अपने प्रोजेक्ट पे काम किया था, एंड देन व्हेन शी टोल्ड कि ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, एंड देन स्टिल ही डिड वंडरफुली वेल। तो आई वाज लाइक यार देखो, करना को आप बहुत कुछ कर सकते हो, आई नेवर मोटिवेट एनीवन, इट जस्ट अबाउट थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली, डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि देखो आप अपना एक अलग, यार अभी आप 12 साल आपने कुछ अलग काम किया है, एंड सडनली यू वांट टू चेंज योर थिंग्स टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, सो हल्का सा डिफरेंट, लेकिन अगेन एज आई सेड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा आप डाउट्स पूछोगे आपके, जितने अच्छे आप चीजें हैंड्स ऑन करोगे ना, उतनी अच्छी चीज आपके लिए। हाँ सर, सेम कंडीशन सर मेरे साथ वही है जो सर बोल रहे हैं। सॉरी, सर हेलो, मैं भी डेली सर मैं भी डेली में हूँ, तो मैं भी डेली चेंज करना चाह रहा हूँ सर, टेक्सटाइल में हूँ you guys, सर। मैं everyone wants to change the career and we are here for that only कि हम पहले सीखे अच्छी चीजें and then we जी change. जी बट क्वेश्चन यस मेरा सर। सिर्फ इतना सा है, व्हाट आई वांट इज गाइस, देखो सीखना समझाना इज नॉट अ बिग डील यार, अपन जी अपना लेक्चर अगर तरीके से एक एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे तो भी हम 1 महीने 1.5 महीने अपना लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट जी कि आप चीजों को पढ़ने के साथ साथ में, देखो रिकॉर्डिंग लेक्चर तो आपके पास रहेंगे यार, जी आप जो भी लेक्चर से आप कभी भी सुन सकते हो, कभी भी वापस रिप्ले कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप जो लाइव कुछ प्रैक्टिस करते, आज मैंने कुछ पढ़ाया और अपना जैसे 2 लेक्चर होता है, अपना वीकेंड लेक्चर है सैटरडे संडे, राइट? सो आज 2 जी लेक्चर होंगे, आज हुआ है कल होगा, सो बाकी फिर आपके पास 5 दिन होंगे टिल नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे, राइट? सो राइट उसमें होगा क्या, दैट उन 5 दिन में आई एम नॉट सेइंग कि आप देखो आप अपनी पर्सनल लाइफ भी आप बिजी भी होंगे अपने काम में, ऑफिस वर्क्स में, बट स्टिल डेली का आधा घंटा या 1 घंटा आप थोड़ा स्पेयर कीजिए, आप एक रूटीन बनाइए अपना कि जो भी हमने उस लेक्चर उस वीक में पढ़ा है सैटरडे संडे में, वो आप 5 दिन में आराम से प्रैक्टिस कर पाओ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाओ, चीजें समझ पाओ, सीख पाओ, फिर गूगल से पूछो, कुछ डाउट है तो, नहीं तो मेरे से पूछो, जो भी है ओवरऑल। सो वो एक बेनिफिशियल रहेगा थोड़ा कि आप यू विल अंडरस्टैंड इजीली, यू विल डू द प्रैक्टिस एंड देन यू विल बी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा एक थोड़ा कि यस यार मैंने कुछ सीखा है, एंड आई एम कॉन्फिडेंस किया, मुझे कोई पूछेगा कि कैसे क्या क्रिएट होता है मिडल मास्टर या बॉम्ब राउटिंग या कुछ भी, सो आई कैन डू दैट, कोई इशू नहीं है ना? सो आई विल ऑल्सो इंश्योर गाइस कि मैं एक एक चीज का, एक एक फील्ड का जो भी हमारे काम किए, देखो देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट एज आई सेड, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर है, जनरल है, एवरीवेयर जहाँ यूज होती है, आई विल इंश्योर दैट एवरीथिंग विल कवर, एवरीथिंग आई विल टीच यू, जो भी हमारे काम किए प्रोडक्शन प्लानिंग के लेके, बट आई एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ दैट रिजल्ट फ्रॉम यू एज वेल, कि नहीं यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप भी उस पर प्रैक्टिस करो, एंड देन यू आस्क मी द क्वेश्चंस, और यू टेल मी कि जब मैं पूछूं कि नहीं आपने प्रैक्टिस किया, देन यू फील लाइक कि हाँ सर मैंने प्रैक्टिस किया है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन टेस्ट माय नॉलेज, दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई वांट फ्रॉम यू गाइस इन रिटर्न, एंड आई होप मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज यार गाइस आई एम डूइंग फॉर यू नॉट फॉर माई सेल्फ, मेरा अगर एज ए ट्रेनर अगर मैं बात करूँ ना, तो आई कैन डू दिस कि मैंने अपना पढ़ाना का काम मैंने पढ़ाया, Right, sir. Right. आई कैन डू इट, दैट्स ऑल आई कैन डू, राइट? राइट सर, राइट सर, आप सही बोल रहे हैं। सॉरी, हेलो सुमित। No, I was saying that your expectation will be directly beneficial for us only. एग्जैक्टली, मतलब देखो यार आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं, देखो
पैसे देना अलग चीज है, आप करना अलग चीज है, आपको टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसका कुछ Yes, thank यूटिलाइजेशन होना चाहिए, राइट? जी right. सर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो चीज। बस वही है मेरा कि आप चीजों को सीखो यार। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ नॉर्मल जस्ट ट्रेनर की यार मैंने अपना काम किया, जैसे होता है ना कॉलेज में लेक्चर्स, अपना आते हाँ हैं सर पढ़ाते हाँ हैं, सर आपकी इच्छा हो आप पढ़ो मत पढ़ो आपकी चॉइस होती है वो, बट आई बिल्कुल एम सर नॉट दैट बिल्कुल काइंड बिल्कुल ऑफ। बाकी ठीक है, आई होप दैट विल। सर हाँ जी, सर राजू बोल रहा हाँ हूँ। जी सर राजू। जो अपने अभी कंसल्टेंट मतलब जो कर रहे हैं वो जो एंड यूजर को जो प्रॉब्लम आएंगी अपन उसके ऊपर कर रहे हैं ना सर? देखो दो चीज है, एंड यूजर को प्रॉब्लम आएगी वो तो है ही है, चलो वो तो आपको सपोर्ट करना ही करना है उनको, इन योर कंपनी और समवेयर वेरेवर यू विल गो एज एन। ओके बट दूसरा होता है कि जब आप किसी भी कंपनी में एसएपी जब पहली बार इम्प्लीमेंट होता है ना, जब एसएपी लगता है यस पहली बार इंस्टॉल होता है, तो देर आर यस मैनी, ऐसा नहीं कि आप जब गए और सीधा आपने एसएपी लगा दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। यस you'll have to go there, you'll have to understand कि जो भी देखो सपोज करो अभी क्या है ना, जैसे आई थिंक भागवत mentioned that he's into dairy industry, okay? यस uh, somebody did, I think Sumit or somebody mentioned that he's in pharma. Who's in pharma? यस Pharma में कौन जॉब कर रहा है? Yes, sir. I am working in pharma industry. Okay, so guys, देखो Himanshu, I have an experience of pharma, I have experience of dairy industry, I have experience of automobile, FMCG, oil industry. तो इतना एक्सपीरियंस मुझे क्यों है? जस्ट इवन दो कि मैंने डोमेन में ज्यादा काम नहीं किया है, मतलब जैसे आप प्रोडक्शन प्लानिंग कंसल्टेंट एज एन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, मैंने यस इनिशियली सर अपने करियर की कुछ साल इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन अब आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, बट स्टिल आई हैव वेरी मच वास्ट एक्सपीरियंस। व्हाई? बिकॉज एज ए कंसल्टेंट जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो ना, तो आपका जो क्लाइंट होते हैं वो हर बार अलग होते हैं। जैसे एक बार यस आपको फार्मा का क्लाइंट मिला, आपने फार्मा के लिए इंप्लीमेंट किया प्रोजेक्ट एसएपी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हो सकता है समझ आपको ऑटोमोबाइल का मिले, तो फिर आप यस ऑटोमोबाइल की समझोगे, ऑटोमोबाइल की तरफ समझाओगे एंड देन आप ऑटोमोबाइल वाली कंपनी में एसएपी इंप्लीमेंट करोगे। अब ओके फार्मा सर का एक अलग प्रोसेस है रन करने का, राइट? और यस ऑटोमोबाइल में गाड़ी बनने का या पार्ट बनने का एक अलग ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, राइट? हाँ बट एज ए कंसल्टेंट आपको वो दोनों चीज आनी चाहिए। एक जस्ट ब्रीफ एग्जांपल आई गिव यू, वो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फार्मा के लिए क्या क्या प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बैच मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ऑडिट वगैरह बहुत होती है, बहुत चीजें होती है जो आप प्रॉपर्ली तरीके से करनी पड़ती है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट, ठीक है? बट यस इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आप इतना ज्यादा टिपिकल नहीं आप कर सकते हो, ज्यादा चीजें आप ऑफ द रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और आप ट्रांजेक्शन यस सिस्टम बाद में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो देयर आर थिंग्स व्हिच यू कैन डू, ओके ये चीजें मैटर ठीक है करती है। एज ए यस कंसल्टेंट यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आप सिस्टम डिजाइन करते हो, समझते हो, कंपनी का रिक्वायरमेंट समझते हो। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी ऑयल इंडस्ट्री में काम नहीं किया है तो मुझे कुछ मतलब आई कैन नॉट डू एज एन इम्प्लीमेंटेशन देयर। या ऑफ कोर्स आप पहले क्या करोगे, आप कंपनी में जाते हो, टूल की पहला फेज क्या होता है, टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट। जैसे एजिस जो बताया था भागवत ने, what हाँ exactly is their existing going on process, कि what they do, how they do it, what are the machines they're using, how time does it make, what is the process they make it, what are the steps to manufacture or extract the oil and all. So like that we understand everything, ठीक है? Properly theoretically and पूरा समझते हैं चीजों को, then we visit the plant as well, कि जो भी उनका एक्चुअल प्लांट ओके होता है we visit that, we understand अच्छा कि कैसे कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कौन सी मशीन पे हो रही है, कितना टाइम किस मशीन पे यस लग रहा है, कितने लेबर लग रही है, क्या लग रहा है, कैसा एफर्ट्स आ रहा है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड। Then यस we use that knowledge to design that process into SAP, कि SAP में इस कंपनी के लिए, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन सी फील्ड किस किस मास्टर में इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड हाउ दैट कैन बी बेनिफिशियल टू दैट कंपनी। That's how we do, like mota. That's how we do. Okay, ओके सर that's what and difference in SAP consultant and end user, ओके सर है ना? सो इट्स यस सर मोर ओवर आप बहुत इंडस्ट्रीज का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत कुछ सीखते हो, आप चीजों को समझते हो, एंड यू आप इन एंड आउट समझते हो चीजों को कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इन एंड आउट क्या है, कहाँ से माल आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं है, कैसे है। बॉम्ब है तो बॉम्ब में कितनी क्वांटिटीज क्या यूज हो रही है, कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। राउटिंग है तो राउटिंग में क्या है, what is the route यस to manufacture, everything you understand, and then we map the systems. So ओके that's the thing. That's how we design this. I hope that was clear to everyone, guys. This was in general knowledge for everyone. Right, Sumit, Girija, Rahul, Umanchu, हाँ सर Rajesh? हाँ सर Exactly. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good. Okay, thank you. So, guys, let's wrap the session here only today, and let's Yeah. start a lesson tomorrow. Start, right? Thank you.
I hope it was a good start and you guys are understanding whatever we are going ahead. Yes, sir. It's a nice introduction session. So let's Yeah. meet tomorrow. Thank you so much, Amit. Thank you. So thank you so much, guys, for joining, and thank you for understanding. I was a bit late today. No worries, we'll join the session on time and we'll try to cover as much as things. Okay. Yes, sir. So yeah, thank you so much, guys. Bye bye. Good night. Take care. Good night, sir. Thanks, sir. Good night. Good night, everyone. Good night. sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. Good night.